Hey YouTube, thanks for visiting my channel. This is Chandan, and in this session we are going to discuss what? So just a second. So this is the third session of West Bengal set 2022. 2023 solution series. Okay. So in the previous three sessions we already discussed various topics. I think 15 to 16 topics we already discussed. Okay. So 15 to 16 topics we already discussed. In the last session we already discussed the linear algebra and the complex analysis, and you all comment me that sir a problem in the question number 10, I think. Yeah, so I think one is watching. So if anyone is there, so then please comment me that audio and video and are okay. Please comment me if there is any technical issue. So in this session we are going to discuss the abstract algebra, that is the modern algebra, and number 2 is graph theory, and number 3 is discrete mathematics. Okay, so मॉडर्न से कितना क्वेश्चन आया था? मॉडर्न से आई थिंक 6 क्वेश्चन आया था, ग्राफ थ्योरी से 1 क्वेश्चन आया था, एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से 1 क्वेश्चन आया था. तो दिस 8 क्वेश्चंस को लेके आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो प्लीज कमेंट मी दैट just a second. So please comment me all are okay, audio video okay na? Please comment once that audio and video are okay. तो चलो करते हैं स्टार्ट. आई थिंक ऑल ओके है. ठीक है, तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एंड दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम एक सीरीज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम abstract algebra. Okay, question number 13. So the question says that what the set of all matrices, I think this is the first question. Yeah, so the set of all matrices is of the form 0x 0y where xy belongs to rational number under the operation of the matrix addition and multiplication is. So there are 4 options. So फर्स्ट क्या कर सकता हूँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो. तो देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, वी ऑल नो दैट द प्रॉपर्टी. ओके, सो ये जो ऑप्शन बी है, ये जो बी ऑप्शन, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ से ही डिस्कस कर सकते हैं. तो कम्यूटेटिव तो नहीं बनेगा. ठीक है, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स है, एंड मैट्रिक्स का खुद का प्रॉपर्टी है जो ए बी नॉट इक्वल टू बी फॉर एनी टू मैट्रिक्स. ओके, सो ये जो प्रोडक्ट मतलब प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का, इस प्रॉपर्टी मैट्रिक्स का इस प्रॉपर्टी से हम लोग ऑप्शन बी को डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, नाउ if we see the option C and D, then there are case of zero divisors. Okay, so now हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का जीरो डिविजर है और नहीं है. तो फर्स्ट एक बार देखते हैं कि जीरो डिविजर का डेफिनेशन क्या था. सो फॉर एनी आई थिंक एनी एलिमेंट्स नॉन जीरो ऑफ एनी रिंग. ओके, so if there exists a matrix or sorry an element B which is not equal to 0 such that AB belongs to 0. ओके, एंड लेफ्ट डिविजर एंड राइट डिविजर का जो तो दो कॉन्सेप्ट था, वो ए बी एंड बी ए का. ठीक है, वो आप लोग देख लेना. एंड एक मतलब लेफ्ट डिविजर हो या राइट डिविजर हो, इन बोथ द केसेस वी से दैट द रिंग हैज जीरो डिविजर इफ दिस सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी. ओके, सो दिस इज द केस ऑफ जीरो डिविजर. नाउ इफ वी चूज अ मैट्रिक्स, सपोज इट इज द गिवन मैट्रिक्स इज 0x 0y. Okay, so if we choose another non-zero matrix such that if a and b, ab equal to 0, then we say that the ring has zero divisor. Okay, otherwise it has no zero divisor. So if we choose a matrix B such that the matrix B equal to 0 b
0 0. Then we see what is AB. So AB equal to 0x 0y and 0b 0 0. Okay, so if we multiply, then 0 0, so 0 0 again completely 0 0 0 0. Okay, so this gives AB equal to 0. That means the ring under matrix addition and multiplication has 0 divisor, but it is not the commutative ring. Okay, so it is a ring, but it is a not commutative ring with 0 divisor. Okay, so here clearly option C is correct one. Okay, A and D are incorrect. Now going to the next question. This is a very easy question. In a group of Z plus, the subgroup generated by 2 and 7. So 2 and 7 are two prime elements. Okay, so we can easily say that the subgroup, which is the subgroup of this 2 and 7, formed by this 14Z. Okay, this is very easy question. Now going to the next question. Question number 28. It says that let Px denote the ideal generated by the polynomial Px in Qx, Q over x, that is the polynomial in x with the coefficient in the field Q. Okay, fx equal to this one and gx equal to this one. Then what is fx plus gx? So here is a formula, fx plus gx. Okay, this is equal to GCD of fx and gx. This is the formula. Okay, so now we check or we find the GCD of fx and gx. So fx equal to, we can write x cube plus x square plus x plus 1. Okay, this is equal to, if we take x common from this term and this term, then we get x square plus 1 terms and then x square plus 1 terms. So this is equal to x square plus 1 into what? X plus 1. This is fx, and gx equal to what? Gx equal to x cube minus x square plus x minus 1. So if we take common x from these two terms, so x into x square plus 1 minus 1 common, x square minus 1. So this is equal to x square plus 1, x square plus 1 into x minus 1. Okay, therefore GCD of what? Fx and gx, this is equal to clearly x square plus 1. Okay, so x square plus 1, that means this is equal to, this is generated by x square plus 1, this one. Okay, therefore the correct answer is your option C. Okay, now going to the next question. Question number 29. This is also a very easy question if we know the formula, otherwise not. Okay, so the number of elements in the field Z iota were 2 plus iota. So here is a formula. So Z iota by 2 plus iota, this is isomorphic to, or sorry, we write the general formula, A plus B iota, this is isomorphic to Z of A square plus B square if GCD of AB is equal to 1. Okay, and therefore the order of the field is therefore clearly A square plus B square in that case. So here A equal to 2 and B equal to 1, that means GCD of 1 and 2 is clearly 1. Therefore we can write Z iota by 2 plus iota, this is equal to, this is isomorphic to, sorry, Z of 2 square plus 1 square, that means this is isomorphic to Z of 5. Okay, and Z of 5 means what is the number of elements in the field? So clearly the number of elements in Z5 is 5, therefore here C is the correct answer. Okay, now going to the next question. This is a question from field. Okay, and remember one thing, that when I take the class for the last minute exam tips, I say that you must check the formulas and some basic results from ring field and from the group theory, and this is the result. Okay, those who are watching that videos obviously agree with me that the questions comes in the exam are not from the deeper section of the abstract algebra. It's just some basic knowledge and from some basic results. Okay, the questions is made up. Okay, so the degree of the extension of this Q root 2 plus cube root of 2 over the field Q root 2.
So first we see here what is the degree of this field only. Okay, so q over what, root 2 plus cube root of 2. Okay, so degree means what? Degree means here degree of irreducible polynomial satisfied by this. This is the root suppose of a polynomial with that degree is called the degree of this extension or degree of this field. Okay, so degree of this field equal to, if we take suppose x equal to root 2 plus this. Okay, so we clearly find that if we do power with 6, then this is a what? I think this is a rational number or irrational number. I think rational number. Okay, then this is satisfied by this one. Therefore, what is the case? So q of root 2 plus cube root of 2, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 6, ठीक है. एंड q ऑफ रूट 2, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 2, ठीक है. देखो ये q ऑफ जो रूट 2 है, इसका मीनिंग क्या है? देखो एक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल जिससे कि रूट 2 सेटिस्फाई करे, ठीक है. तो देखो x इक्वल टू, इफ वी राइट रूट 2, देन वी क्लियरली से x स्क्वायर इक्वल टू 2. सो दिस इज a rational number and root 2 satisfies this polynomial or this irreducible polynomial. So the degree of this irreducible polynomial is 2 here. Okay, similarly the degree of this polynomial is 6 here. Okay, now we here use the simple extensor formula, that is, so q over root 2 plus cube root of 2, okay, and over cube of root 2, this is equal to what? Or you can use here this sign. So this is equal to q. So इसका जो है q के ऊपर फिर मतलब ऑर्डर क्या है? 6 है, ठीक है. तो q के ऊपर ऑर्डर होगा, we break it or we expand this like this. So root 2 plus cube root of 2 is to q के ऊपर, and ये क्या होगा? q and q of root 2. Okay, you can expand in this way. तो इसका क्या वैल्यू है? इसका वैल्यू तो गिवन है 6 and we have to find sorry, this is cube root 2, this is q over root 2 and q root 2 over, or q over q root 2 you can also write over q. This is the formula. This is equal to, this is we have to find, so q into root 2 plus cube root of 2 into cube of रूट 2, एंड इसका वैल्यू क्या है? क्यू रूट 2 ओवर क्यू, ये जो इसका वैल्यू है 2, सो इनटू 2. ओके, दैट मीन्स सिंपली वी कैन राइट क्यू इनटू रूट 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 ओवर क्यूब रूट 2. इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 6/2. दिस इज इक्वल टू 3. ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज 3. ओके, आई थिंक कैन अंडरस्टैंड. So those who are watching live, please like, share and subscribe. Okay, so this is the answer of option C here. Now going to the next question. So question number 33, it says that which of the following statement is correct here? So here 4 statement is correct and I have some confusion in this problem. So I will solve these questions now. I already solved these questions once. See here we can use a theorem. Okay, so a silo P subgroup, you get this result from what? You get this result in any book. Okay, for silo P subgroup, of a finite group, for silo P subgroup of a finite group, G is normal subgroup, if and only if it is the only silo P subgroup, only silo P subgroup. Okay, so this is the result. That means क्या है, यदि हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये जो साइलो P सब ग्रुप मतलब साइलो 2 सब ग्रुप है,
ये H3 क्रॉस Z10 में एक ही साइलो 2 सब ग्रुप है, देन वी कैन से दैट दिस इज द नॉर्मल सब ग्रुप. सो इफ वी चेक A, B and option D, so see what happens. I already check, so let's see what happens. So देखो S3 का, S3 में फर्स्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि S3 में 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, S3 का जो है पार्टीशन लिखना पड़ेगा 3 का. ठीक है, तो 3 का जो पार्टीशन होता है 1 + 1 + 1, सॉरी 1 + 1 + 1 ये, एंड 1 + 2 एंड है 3 खुद. ठीक है, तो देखो 2 ऑर्डर के एलिमेंट फाइंड करना है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स का एलसीएम 1 होना चाहिए. ठीक है, तो इस जो सॉरी ये जो मतलब क्या है पार्टीशन है, यहाँ से हम लोग सिर्फ पाएंगे कि एलसीएम ऑफ 1 and 2 दिस इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 1 and 2 इक्वल टू 2, दैट मीन्स, एंड वन मोर फॉर्मूला हियर वी नीड, which is that number of elements of order D in Sn is equal to what? In factorial by 1 to the power alpha 1, 2 to the power alpha 2, similarly 3 to the power alpha 3 and k to the power alpha k into alpha 1 factorial, alpha 2 factorial and alpha k factorial. This is the formula where alpha I are equal to, where alpha I is equal to the number of i's in the selected partition and LCM of 1 to n, this is equal to D. So we see this one only. So this is the formula and we apply this in here. Okay, so that is order of elements of order 2 in S3. ये क्या होगा, देखो S3 में 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा, तो यहाँ से 2 ऑर्डर का एलिमेंट लिखते हैं 3 फैक्टोरियल बाई, यहाँ से लिखेंगे हम लोग 1 to the power 1 into 1 factorial and 2 to the power 1 into 1 factorial. That means 3 factorial by 2, that means 3 here. Therefore number of elements of order 2 in S3 is 3. Okay, so and here also get we have S4 and S4. Okay, so now we find in case of S4 the number of, first we find the elements. Okay, number of elements of order 3 in S4. Okay, so number of elements of order 3 in S4. S4 का पार्टीशन लिखते हैं, S4 का पार्टीशन क्या क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1. okay, and then 1 + 1 + 2 and 1 + 3 and 4 खुद. तो यहाँ से हम लोग जो 3 ऑर्डर के एलिमेंट पाएंगे सिर्फ. ठीक है, तो इसका मतलब कितना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो 4 फैक्टोरियल बाई 1 to the power 1 into 1 factorial into 3 to the power 1 into 1 factorial. So 4 factorial by 3 and 4 factorial by 3 means here clearly 8. Okay, so the number of elements of order 3 in S4 is 8. ठीक है, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं नाउ. ठीक है, ये है बात फर्स्टली. We already use this formula, so it is this also. And one more formula we need here, which is subgroup of order 2. Okay, subgroup of order P means here क्या होगा, number of elements of order P by phi P और phi n, n लिखते हैं यहाँ पे और d लिखते हैं. ठीक है, d by phi of d, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज होगा. ठीक है, तो देखो
क्या होगा, फर्स्ट S3 एंड Z10 को लिखते हैं, ठीक है, S3 एंड Z10 को ऐसे लिखते हैं हम, एंड देन 1 2 3 एंड 10 का डिविजन 1 2 एंड 5 एंड 10, एंड यहाँ से मतलब किस किस का मतलब जो है LCM 2 आएगा वो यहाँ से निकालना होगा, ठीक है। तो देखो 1 एंड 2 का LCM होगा एंड 2 एंड 1 का LCM होगा 2 ओनली, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, LCM एंड 1 एंड 2 एंड LCM ऑफ 2 एंड 1। देखो S3 में 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा, यहाँ से लिखेंगे हम, जो होगा 1 एंड जो है Z यहाँ पे क्या होगा 5 ऑफ 2 होगा, ठीक है, 5 ऑफ 2 होगा या 5 2 इन Z10, ओके। एंड यहाँ से क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S3, मतलब ये होगा 3, ठीक है, ये होगा 3 एंड जो Z10 में होगा वो क्या होगा 5 ऑफ 1, दैट मीन्स 1 ही होगा सिंपली, ठीक है। एंड 5 2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे Z10 में, आई थिंक ये होगा 5, ठीक है, 5 क्योंकि 5 2 मीन्स Z10 इंटू 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2, दिस इज 5 होगा एंड ये होगा 3, तो टोटल एलिमेंट्स होगा 8, ठीक है। 2 ऑर्डर का एलिमेंट्स कितना होगा यहाँ पे S3 क्रॉस Z10 में 2 ऑर्डर का एलिमेंट्स होगा 8, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जो है सब ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, सो P साइड ऑफ P दैट इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, इसको क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 बाई 5 ऑफ 2, ठीक है। तो 5 ऑफ 2 का वैल्यू 1, आई थिंक इसका वैल्यू जो होगा ये पूरा के पूरा 1 ही होगा, 8 बाई 5 2 मीन्स 1, सो दिस इज 8. So this is not unique subgroup. There are 8 silo 2 subgroup in S3 cross Z10. So this is not our answer. Okay, we have to find the unique subgroup of order this. Anyone is there? Okay, please comment me once if anyone is there. So this is the case. Okay, and now so this is not our answer. Similarly, we calculate here in S4 cross Z10. So S4 यहाँ पर लिखेंगे S4 एंड यहाँ पर लिखेंगे Z5. सो S4 में 1 2 एंड 4 होगा, 4 का डिविजर एंड 5 का डिविजर होगा 1 एंड 5 ओनली, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे S4 में, सॉरी 1 2 3 4 पूरा के पूरा ही लिखेंगे, ठीक है, S4 के लिए। तो ये होगा इसका केस। नाउ ये यहाँ पे ओनली 3 एंड 1 होगा, ठीक है, 3 एंड 1 होगा, ठीक है। 3 ऑर्डर का कैलकुलेट कर रहे हैं ऑप्शन बी के लिए, ठीक है। तो देखो LCM ऑफ 3 एंड 1 होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो S3 में 3 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है, S4 में, सॉरी S4 में 3 ऑर्डर का एलिमेंट है 8, तो 8 इंटू एंड 5 ऑफ 1 मीन्स Z1 के लिए 5 1 लिखेंगे, तो इसका वैल्यू होगा 8, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, दैट इज नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S4 क्रॉस, ये जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स S4 क्रॉस Z5, S4 क्रॉस Z5 में, ठीक है। जो 3 ऑर्डर का सब ग्रुप कितना होगा, 3 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा 8 बाई 5 3, 8 बाई 5 3, 5 3 मीन्स 2, सो 4 बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2, 5 3 मीन्स 2, या तो इसका वैल्यू ये होगा, ठीक है। 5 3 मीन्स या 2, आई थिंक, या ठीक है, करेक्ट है आई थिंक, एंड 5 2 का वैल्यू आई थिंक यहाँ पे 5 होगा, ये आई थिंक मैंने गलत कर दिया, जस्ट कमेंट मी इफ वी राइट करेक्ट और रॉन्ग। आई थिंक 5 2 का वैल्यू तो 1 होगा, तो 1 एंड 4 4 होगा, ठीक है। प्लीज कमेंट इफ आई डू रॉन्ग, ओके। सो इसका वैल्यू क्या होगा 4 ही होगा, तो ये यूनिक नहीं है, ठीक है। तो यूनिक नहीं है तो होगा नहीं, ठीक है। एंड नाउ इसका जो वैल्यू है ये भी 4 है, तो ये भी नहीं हो रहा है नॉर्मल सब ग्रुप, तो ऑप्शन बी भी फॉल्स हो रहा है, ठीक है। नाउ वी चेक ऑप्शन डी के लिए चेक करते हैं, ठीक है। सो डी के लिए क्या होगा ये देखते हैं। तो आप लोग कमेंट कर देना एक बार, ठीक है।
इफ मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो S4 में नाउ S4 लिखते हैं यहाँ पे एंड Z3 लिखते हैं, ठीक है। S4 का 1 2 3 4 एंड Z3 का 1 एंड 3 स्लिप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 एंड 3 आएगा एंड 3 एंड 1 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट LCM ऑफ 1 एंड 3 में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा एंड LCM ऑफ 3 एंड 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 S से आ रहा है, मतलब यहाँ पर 1 होगा एंड 5 2 का वैल्यू होगा, 5 3 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है 8, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 8 एंड 5 ऑफ 1, तो इसका क्या वैल्यू होगा 2 एंड इसका होगा 8 आई थिंक, ठीक है। तो टोटल कितना एलिमेंट होगा S3 S4 क्रॉस Z3 में एलिमेंट होगा 10, ठीक है। तो S3 क्रॉस Z4 में जो है 3 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा 10। नाउ सब ग्रुप फाइंड करेंगे कैसे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S4 क्रॉस Z3 बाई क्या होगा 5 ऑफ 3, तो इसका जो वैल्यू होगा 10 बाई 5 ऑफ 3 मीन्स 2, दैट मीन्स ये भी 5 हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये तीनों के तीनों केस में यूनिक तो जो सब ग्रुप साइलो 2 या साइलो 3 सॉरी साइलो, यहाँ पर है साइलो 2, यहाँ पर है साइलो 3 एंड यहाँ पर है साइलो 3, ये जो तीनों के तीनों नंबर ऑफ सब ग्रुप से यूनिक नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या बोला था, इफ एंड ओनली पी साइलो सब ग्रुप, तो यहाँ पर ओनली नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये तीनों के तीनों ऑप्शन फॉल्स हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन सी ही करेक्ट, ठीक है। देखो साइलो पी सब ग्रुप G1 क्रॉस G2 इज नॉर्मल where G1 and G2 are finite abelian group. I don't read this result or I can't remember this result, whether this is result or wrong result or not, okay. So that's why I solve these questions in this way, whether or maybe this is a result, okay, and we can directly solve this question, okay, by using the result, okay. So this is the fact. Now going to the next question, and these 6 questions are from abstract algebra, and this is the last question of abstract algebra, okay. Now we are going to the question number 50, which is from graph theory, and this is a very easy question. Directed graph is in graph in which, so this is very easy formula, set of vertices that are connected by the directed edges, okay. So if we write a figure, so this is suppose a graph, okay. Directed graph means these are the vertices and the edges have a direction, okay. Suppose this one, this one, this one and this one, these are known as the directed edges, okay. Edges means what? Edges means the sides which are connected by the vertices or connected through the vertices, okay. You can also write these types of edges, these are also edges. So this is, you can take directed graph, okay. So this is very easy, and this is a simply definition problem. Definition of directed graph, option B, set of vertices that are connected by the directed edges, okay. So this is the option B is correct one. Now this is also a definition, just question number 51, this is from discrete mathematics, okay. Discrete mathematics, the question says that the poset in every pair of elements has both LUB and GLB termed as lattice. This is definition of lattice, okay. A poset in which every pair of element which has least upper bound as well as the greatest lower bound is called lattice. So this is the correct answer. This is simply definition from discrete mathematics, and lattice is the answer, okay. And sublattice means subset type of definition, you can say, that is called the sublattice, okay. So these are the questions for today's session. This is a very small session with 8 questions, and the questions are from modern algebra plus graph theory plus discrete math, okay. Discrete math. So after this session, I think I will take some class, or if you agree, then we will continue the session for GATE, and I think I will take 6 or 7 session for GATE न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड LPP भी कंप्लीटेड है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। LPP का जो प्लेलिस्ट है ना, मतलब आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेलिस्ट, यू कैन चेक वंस। एंड LPP का सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है पूरा 20 आई थिंक 17
2015 से 2022 तक पूरा के पूरा एलपीपी का सॉल्यूशंस अवेलेबल है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो फॉर गेट। एंड दिस प्लेलिस्ट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर सेट एग्जाम ऑल्सो। द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम एलपीपी सेक्शन. I already solved the questions of set exam which is comes from gate paper, and I already solved the questions in the gate session. So this is a great achievement for me that the question is common. And I also say in the last question, last session, in the session that I'll take the last minute exam preparation for WBSET. I already say on that session that this type of questions can be make or maybe comes in the exam. Okay, so this is the case, and you can check the playlist for gate LPP section, and also for also get numerical analysis. And also one more thing is that we already take some classes on get general aptitude, ठीक है, जनरल एप्टी, बिकॉज देखो एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स है गेट में, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन में भूल गया था, देखो तो आप लोग कुछ लोग बता रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 10 में पूरा गड़बड़ हो गया है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग सभी ने ऑप्शन बी बता रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक आई विल मेड ए मिस्टेक, आई मेड ए मिस्टेक देयर, so I think this answer will be correct. Okay, so Cauchy-Riemann equations satisfied at the origin, but f dash 0 does not exist. I think you also are right. Some of you already comment me that sir, this option is right, so I think yeah, this option is correct. Okay, so this is the correction for the videos or for the sessions for complex analysis also, so you must check once and correct it. I think this is the answer. Okay, and in the sessions I say that this is the answer, option D, but I think D not, option B is the correct. You are right. So thank you for comment me, and thank you for the response for your comments. And हाँ, जो बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, देखो ये जो गेट का जो एप्टी है, ठीक है, एप्टी के लिए आप लोग क्या करो, देखो प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में मतलब गेट का, देखो गेट आप लोगों को धोखा नहीं देगा, ठीक है, ये बात पक्की है, ठीक है, पक्का है। यू कैन बोल सकते हो कि दैट गेट धोखा नहीं देगा, क्योंकि गेट का जो लेवल होता है वो हर बार मतलब लगभग हर ईयर सेम होता है, ठीक है। तो दिस इज द पर्पस, एंड वी विल ऑलरेडी टेक सम क्लासेस ऑन गेट एप्टीट्यूड। आई थिंक 5 PYQs फ्रॉम मैथ सेक्शन कमेंट मतलब कवर किया हूँ मैं। एंड स्टैट का जो 2 डिस्टिंक्ट पेपर है, ठीक है, 2 पेपर मैथ के लिए मेन सेम है यहाँ से, एंड स्टैट का जो डिस्टिंक्ट 2 पेपर से, क्योंकि स्टैट 2019 से हो रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट, तो ये 7 सेशंस लिया है, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हो, गेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ गेट जनरल एप्टीट्यूड ऑफ PYQs फ्रॉम डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड आई थिंक आई विल ऑल्सो टेक द बायोलॉजी। सो फर्स्ट क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट का जो 5 सेशंस लास्ट 5 ईयर्स कवर करेंगे, एंड देन इफ there may be times or there are times then we will also take some other classes for general aptitude. Okay, so thank you for watching. This is the announcement for today's session also, and this is the session. So thank you. If anyone comment me anything, I will just check. So those who are watching, so please give a like. Okay, मेरे को कमेंट शो नहीं हो रहा है, कुछ लोग कुछ भी कमेंट नहीं किया है क्या? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इट्स ऑलमोस्ट 11, आई थिंक इट्स 11:06। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।